students, the next topic in the computer graphics is the composite transformation. So the composite transformation we will done in the three-dimensional transformation. So it is similar to the two-dimension and three-dimension. What the difference is that the composition of transformation is two or more transformation that are to be performed one after the other. Sometimes it is equivalent to a single transformation. For example, here the diagram shows that there is a translation followed by a reflection. So there is an object in a triangular form. The original triangle is the brown triangle and the image is the blue striped triangle. So the image means this is the reflection in the blue or in the blue triangle, and the brown strip triangle shows the intermediate step after the translation has been takes place. So it means that the composition transformation means the composition of two or more transformation. जब हम एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एक ही टाइम पे करते हैं, देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द कंपोजिट. यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रही है एंड ट्रांसलेशन भी. So if we are talking about any example, like if we want to translate a shape with two successive translation vectors, that is tx1 and ty1 and tx2 ty2, these are the translation factors for x and y. They are the two successive translation factors, so it is equal to a single translation of tx1 plus tx2 and ty1 plus ty2. जब हम दो ट्रांसलेशन फैक्टर्स से उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के ट्रांसलेशन फैक्टर्स को ऐड कर देंगे. दिस एडिटिव प्रॉपर्टी कैन बी demonstrated by the composite transformation matrix, that is represented by in the matrix form like this. The matrix form, all the diagonals are 1 and tx1 and ty1 into multiplication of the matrix with the second translation factor. So by applying the multiplication matrix form, we get the matrix of form 1 1 1 in the diagonal form, others are 0, and tx1 plus tx2 ty1 plus ty2. So it shows that there are the two successive translations which are additive. So the next one is the rotation. If we want to rotate a shape with two successive rotation angles and about the origin, then it is equal to rotating the shape once by the angle plus about the origin. Similarly, this additive property can be demonstrated by the composite transformation matrix. So न्यूमेरिकल फॉर्मूलेशन सेम है, मैट्रिक फॉर्मूलेशन सेम है. हम पॉइंट प्रूव कर रहे हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन फैक्टर प्लस एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं. सो रोटेशन की फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1. दिस इज अबाउट द ओरिजिन. सो अप्लाइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो का कॉस थीटा इंटू कॉस 5 एंड प्लस माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस 0 इंटू 0. तो ऐसे ही हम बाकी करते जाएंगे. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम. सेकंड रो में अगेन हमारे पास क्या है कि सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड द सेकंड कॉलम एंड अप टू सो ऑन. तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आती है दैट इज कॉस 5 थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 cos theta plus 5 0 0 1 and 0 0 1. So it also proves that the two successive rotations are also additive. So the next one is the scaling. स्केलिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इट. द एनिमेशन illustrates a transformation sequence to produce the scaling with respect to a selected fixed point, that is a and b, using a scaling function that can only scale relative to the coordinate origin.
So we can translate the object so that the fixed point coincide with the coordinate origin, scale the object with respect to the coordinate origin, use the inverse translation of step 1, and to return the object to its original position. So the composite matrix for this sequence is obtained by T equal to T1 into T2 into T3. So the T1 translation vector value is 1001 diagonal form में and minus a and minus b to the third row. Then T2 is the x, s, y and 1 in the diagonal form, which represents the scaling factor. Value T3 is equals to 100010 a, b and 1. And third में क्या है, translation vector is sx000 sy0, and by by applying the additive property a 1 minus sx, b 1 minus b sy and 1. So this can also shows the composite matrix for the scaling transformation. These are the some of the examples on which the composite transformation may be applied: the scaling, rotation and the translation vector.